Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 25th of November. In this video students, we are talking about 4 new labor codes that have been made into effective to simplify and streamline the labor laws. Then we are talking about Prahlad Joshi, who has unveiled major digital upgrades to strengthen the food storage, logistics and PDS. Then we are talking about India that hosted the 7th edition of the NSA level meeting of Colombo Security Conclave in New Delhi. And then COP30 summit held from 10 to 21st of November in Brazil. All these things and many more will be discussed in this video students. So stay tuned with us till the end. If you are new here students, I want you all to subscribe to our channel and also hit the like button, as the content we provide on daily basis is top notch and it is provided in a very refined way that will help you in your preparation for the competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. 4 new labor codes made effective to simplify and streamline the labor laws. These labor codes will come into effect from 21st of November. Right? Which are these? These are the Code on Wages of 2009, the Industrial Relation Code of 2020, Code on Social Security 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Condition Code for 2020. Right here, if we see the Code of Wages for 2019, this code consolidates the 4 existing laws. These are the laws, and the code establishes a statutory right to minimum wages for all employees across both organized and unorganized sectors. So this one is important students, and I want you all to take a note of this. Right, the Code of Wage for 2020, that is to establish a statutory right for the minimum wages here. Correct? Take a note of this. So rest 4 codes, rest 3 are left. Do visit our PDF for the same reference. Next, right, one of the code here is Occupational Safety, Health and Working Condition Code. Here the objective of the code has twin objectives, right? That is safeguarding workers' right and safe working conditions and creating a business friendly regulatory environment. Moving on students, Prahlad Joshi has unveiled major digital upgrades to strengthen the food storage, logistics and PDS. What is PDS students? PDS is your public distribution system. See, we know we are the largest populated country in the world, right? So in order to cater such a large population, right, sometimes we have to provide free goods also, free services also. These services are provided through internet, right? They have portals, right? Proper database is there. So for all this, our digital public infrastructure has to be very good in order to cater such a large population, because if we manually handle all those data, if we manually handle all those peoples, right, then it will become very difficult. So we need major digital upgrades, right, in the storage food system, then in your logistics system and in your public distribution system. As with this we will be able to cater, or with digitally we will be able to cater these particular sector, right? Food storage will be strengthened, logistics will become better, as we will be having better data at that what time we should deliver the goods, or which are the easiest mode of transport that will be required for transporting that good, or the location, which are the better location. If we set up our warehouses in so and so location, then the logistic becomes easy. So with this and with the rise of AI now, all these things will also become better, as the analysis of the data will be becoming better here. Similarly, if we see some initiatives that were launched here, that is Bhandaran 360. It is an advanced enterprise resource planning platform developed by Central Warehousing Corporation under the Ministry of CAFPND and SAP, right? Second, this is the first initiative. Second initiative is Smart Exim Warehouse System, right? This has been launched, where Smart Exim is basically Export Import Bank of India, right? So for Exim, Smart Exim Warehouse Systems has been launched here.
Then third is your Anna Darpan, the FCI Food Corporation of India. They have launched this Anna Darpan, that is a microservice based platform replacing the depot online system to unify the procurement, storage, movement, labor and quality operations. Right, apart from this, you can see here we just saw Bhandaran 360 Smart Exim Warehouse, Anna Darpan, Asha, that is an AI platform, then modern silo facility, right, that has been launched here. Moving on, students. Next is India hosted the 7th NSA level meeting of Colombo Security Conclave. Where was this held? It was held in New Delhi. Right, take a note of this. This was chaired by whom? It was chaired by Ajit Dovalji, who is the National Security Advisor of our India. This was the 7th edition of the NSA level meeting of Colombo Security Conclave. When it was held? It was held on 20th of November. Who hosted it? It was hosted by New Delhi in India, right? And Ajit Dovalji, who is the National Security Advisor, was the chair here. Correct. Which was the guest country during this? Malaysia. Malaysia was the guest country. Next is international affairs, students. COP30 summit held from 10th of November to 21st of November, where it was held in Belém, Brazil. I repeat, 30th session of the United Nations Climate Change Conference, or 30th COP to the UN Framework Convention on Climate Change, took place from 10 to 21st of November in Belém, Brazil. This COP30 summit was presided over by the Brazilian diplomat who served as the COP30 president. And who was the president here? Andre Arjona do Lago. Correct, students? Take a note of it. Then next, if we see here, climate change performance index was launched and our country India ranked 23rd here. India stood at 23rd position in the climate change performance index. Now the next question can be here is that who secured the top position in this index? What was the rank of India in this index? It is 23. Then next is who secured the top position in this index, right? Here, so remember, if we talk about this, no country achieved a very high ranking, right? That means no country is in the top 3. No country is in the top 3. So if we see which is at the 4th position, let me see at 1st to 3rd, there is no country. 4th is Denmark, 5th UK, 6th Morocco, 7th Chile, 8th Luxembourg, and 23rd position is of our India here. Right, students? So this is the 30th UN Climate Change Conference held from 10 to 21st of November. Right? Moving on. The next, students, we are talking about banking and finance. FAB and Hub 71, they have partnered with UAE India CEPA Council to support the Indian startups. See, students, as we know, India is the largest populated country in the world. So in order to give job opportunities, employment to such a large population, it is very difficult, right? In this case, the government is providing various government jobs, then private sector is there, then MSME is coming up, right? And we are helping the MSMEs. Even the government is supporting the MSMEs as they are a big source of revenue generation, right? And it brings a lot of employment for the youth of India, right? So here, startups, why they are important? Because with them we will be seeing that new services, new products, they will be coming into the play, and then the people will be trained in those services or products, and then employment generation will be there. Hence these are the two organizations, that is first Abu Dhabi Bank, right, and Hub 71. They have partnered with UAE India CEPA, that is your Comprehensive Economic Partnership Agreement Council, to support the Indian startups. And with this you will be seeing between India and UAE that the startups that will be coming in the market, they will be having a larger audience, right? They will basically say, for example, there is a startup in India, then its audience, its market will be open to UAE also, and vis-a-vis. Next is economy and business, students. S&P Global Ratings has retained India's GDP at 6.5% for FY26. Take a note of this, right? That is the global rating agency S&P Global. They have released their report retaining India's GDP forecast at 6.5% for FY26. Correct? And for FY27, it is projected at 6.7%.
Next is LG Electronics and Amazon. They have signed an agreement for Wi-Fi patent licensing. What is Wi-Fi? Wireless fidelity. It is the wireless internet that you are receiving in your mobile phones, right? Or laptops or any other device, correct? So LG Electronics and Amazon, correct? They have signed this patent licensing agreement with Amazon for their Wi-Fi SEP, Standard Essential Patents, representing a key move to reinforce its leadership in global technology standards. Next is appointments and resignation, student. Sunil Paliwal appointed as the chairman of IWAI. What is this IWAI? Inland Waterways Authority of India under the Ministry of Port, Shipping and Waterways. He succeeds whom? He succeeds Vijay Kumar, who was appointed as the secretary of the Ministry of Ministry of Port, Shipping and Waterways. Correct, students? Take a note of it. Next is science and technology. Indian Navy, they have commissioned the indigenously built anti-submarine warfare shallow watercraft INS Mahi in Mumbai, Maharashtra. Right, take a note of it. This was at the Naval Dockyard in Mumbai, Maharashtra. The ceremony was presided over by General Upendra Dwivedi, the Chief of Army Staff. Correct, take a note of this. And there is a mascot here, that is of cheetah. Correct. So question can be asked about Indian Navy. Who they commission what? Anti-submarine warfare shallow watercraft. What is the name of it? INS Mahi. And there is a mascot, that is cheetah. Moving on. Next is Oman. They have launched the first communication satellite, that is Oman Sat 1. Right. This is the first communication satellite of the Oman that marks a significant milestone in the field of space technology and telecommunication. Right. The satellite is Oman Sat 1. This is the name that I want you all to remember. Moving on, next is World Boxing Cup Final 2025 was held where? It was held in Noida, UP. So this is the location at the Greater Noida, UP, at the Shahid Vijay Singh Pathik Sports Complex, that is in Greater Noida. This event was held from 16th to 20th of November. The 5-day event served as the season finale for the 2025 World Boxing Cup Series that was organized by World Bank in partnership with the Boxing Federation of India. Then another thing, remember, this first edition of the World Boxing Cup was held in 3 stages. If we talk about India, India won a total of 20 medals, 9 gold, 6 silver and 5 bronze. Here you can see the rankings. Next, India won the inaugural Blind Women's T20 World Cup. I repeat, who recently won the inaugural edition, that is the first ever edition of the Blind Women's T20 World Cup? It was won by our team India, right? So Indian women's team or Indian women's blind team has recently won this T20 World Cup. This is T20. It is related to which sport? It's related to cricket. Next is World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day. It is observed on 19th of November. And this day is observed basically to raise awareness about the chronic obstructive pulmonary disease that is observed on 19th of November, right? And this day is generally observed on 3rd Wednesday of November, on 3rd Wednesday of November month, right? And this year it was the 24th year celebration on 19th of November. There's a theme also, students. Theme being short of breath, think of COPD. Next is World Children's Day, observed on 20th of November. And this day is observed basically to promote international unity, raise awareness about children's issue and enhance their welfare. There's a theme here, listen to the children, my day, my rights. This is the theme that I want you all to remember here. Next, World Television Day, observed on 21st of November, and this day is observed to raise awareness about television, how it played an important role in the television, in telecasting or in broadcasting the news globally, right? And the importance it has in our day-to-day life. This year, it is the 29th edition or 29th observance of this day. Next, World Fisheries Day, observed on 21st of November, and this day is observed to raise awareness about safeguarding aquatic ecosystems and the livelihoods of those people who depend on fishing. This year it was the 28th edition of the World Fishing Day.
Also, there is a theme, students. Theme being India's blue transformation, strengthening value addition in seafood exports. Next. So these are your important current affairs. Now let's move to the revision part. Is identify the persons who were announced as the winners of the Nobel Prize in Physiology or Medicine in October 2025. So identify the persons here. So first A, B and C. These are the three individuals who were announced as the winners of the Nobel Prize in Physiology or Medicine. Next, Indian peacemakers of which country were honored for their dedicated services by Major General Robert Ya Affam, acting head of the mission of the UNISFA, that is United Nations Interim Social Security Force by Abbey in October. So, Indian peacemakers of which country were honored for their contribution of Sudan, they were honored. Next, choose the ministry that implements the national service scheme under which the My Bharat NSS Awards 22-23 were presented by the President of India, Draupadi Murmu ma'am. So it is Ministry of Youth Affairs and Sports. Next, who among the following jointly received the 2025 Nobel Prize in Physics for their discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit? So all three of them has jointly received the Nobel Prize in Physics. Next, who among the following jointly won the 2025 Nobel Prize in Chemistry? If we look at the option, all three of them have won the Nobel Prize in Chemistry for the development of metal organic frameworks. Next, Lieutenant Colonel Honorary and Malayalam actor Dash was facilitated with the Chief of Army Staff Commendation card by the General Upendra Dwivedi in October for his outstanding societal contribution and support to the armed forces. So, Lieutenant Colonel and Malayalam actor Mohanlal Vishwanathan, he was honored here with this award. Next, who was awarded the Nobel Prize in Literature by the Royal Swedish Academy of Science for his compelling and visionary aware that in the midst of an apocalyptic terror reaffirms the power of art. So who was awarded here Nobel Prize in Literature? Laszlo Horkai, right, awarded here. He became the second Hungarian author to win the Nobel Prize in Literature. Next, name the Indian business leader who retained the top position on the Forbes 100 India's rich list with a net worth of $105 billion, marking the 14th consecutive year as India's richest person. So, right option is Mukesh Ambani. Next, Maria Corina Machado became the first person from which country to win the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights and a peaceful transition from dictatorship to democracy. Right option is Venezuela. Next, identify the economists who were awarded the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, announced by the Royal Swedish Academy of Science in October. So, identify the economists. Here you can see Joel Moyka, Philippine Agian and Peter Howitt. These are the economists that are awarded with the 2025 Sveriges Riksbank Prize. Next, find out which of the following beaches is not among the 5 Maharashtra beaches that received the International Blue Flag certification in October. So here, Devka beach is among the 5 Maharashtra beaches that received the International Blue Flag certification. Rest, they did not receive the Blue Flag certification here. I correct myself. This is the beach that did not receive Devka beach. Rest 4 beach, they received the Blue Flag certification. Next is name the bank that recognized by the Global Finance as Asia's safest bank for the 17th consecutive year as in its World's Safest Bank in Asia 2025 report. So it is DBS Bank that is considered as Asia's safest bank. Next, who became the first from India to climb 9 of the world 14 peaks above 8,000 meters after scaling Mount Cho in October. So right option is Bharat Thameni, right? He became the first from India to climb 9 of the world's 14 peaks. Next, who was honored with the BRICS International Award for contribution to spiritual education, cultural development and maritime innovation at an event hosted by the State Duma of the Russian Federation in Moscow in October. Right option is Abuspan Kharkarov. Next, which ministry received an award from the President Draupadi Murmu in October for its outstanding contribution to the implementation of Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Abhiyan scheme? So, which ministry received the award? It is the Ministry of Women and Child Development. Next,
who won the British Academy Book Prize in October for his book titled The Burning Earth, An Environmental History of the Last 500 Years. So, who won this book? Sunil Amrit. He is the author of this book who won the British Academy Book Prize in October. Next, Union Minister Rajnath Singh, our Defence Minister, conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel upon Neeraj Chopra in which voluntary military force of India? It is for the Territorial Army. Next, identify the Indian scientist who was featured among the world's top 2% scientist list for the third consecutive year, that is from 2023 to 2025, released by the Stanford University of USA and Elsevier Publishers in October 2025. So, right option is Dr. Ashok Kumar Viramuthu. Next, in October, Government of India announced the winners of the second edition of the Rashtriya Vigyan Puraskar, who was honored posthumously with the Vigyan Ratna Award for his outstanding lifetime contribution to the physics. So, right option is Professor Jayant Vishnu Narlekar. Identify the correct statement regarding Prime Minister of India Narendra Modi's visit to China from 31st of August to 1st of September. If we see here, option A and option C are right, B is wrong. It is saying Vietnam was granted the status of SCO dialogue partner by the CHS of SCO member nation. Is it so? Is it your Vietnam that was granted here the SCO dialogue partner status? No, it is Laos People Democratic Republic that was granted this status. Laos People Democratic Republic was granted the status of SCO dialogue partner. Next, which edition of the Global Sustainability Summit was held from 2nd to 3rd of September in New Delhi, organized by CCI, Confederation of Indian Industry, ITC Center of Excellence for Sustainable Development. So it was the 20th edition of this Global Sustainability Summit. Next, in September, which of the following organization unveiled the theme for the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave scheduled to be held from 3rd to 5th of November at Bharat Mandapam? So it is Department of Science and Technology. Next, who led the Indian delegation at the 44th meeting of the Shanghai Cooperation Organization Regional Anti-Terrorist Structure Council held in Cholpon Ata in Kazakhstan? So who led the Indian delegation here? It was led by TV Ravichandran. Next, which ministry organized the first ever Gyan Bharatam International Conference on reclaiming India's knowledge legacy through manuscript heritage in September? It is Ministry of Culture. Next, where did the 4th Coast Guard Global Summit was held in September, in which India Coast Guard participated, reaffirming India's commitment here? So it is Italy. Where was this held? It was held in Italy. This is the location. Next, how much funding was announced under the call for proposal schemes to support startups in green hydrogen innovation during the inauguration of the first Green Hydrogen Research and Development Conference in September? So how much funding? It was 100 crore rupees funding that was called for the proposal schemes to support the startups in green hydrogen. Next, in the 2-day National Agriculture Conference, that is Rabi Abhiyan, held in New Delhi, the Government of India set the target of 362.5 million tons of food grains for Rabi season for FY26. That means we need to grow this amount of food grains. Next, students, now these were your summit and conferences. Now let's move to science and technology. First is, mention the company that signed a licensing agreement for the transfer of technology with the Defense Metallurgical Research Laboratory, Hyderabad, Telangana, to produce fused silica radar domes, a vital component used in the seeker-based guidance systems of missiles. So, which is it? It is Bharat Heavy Electricals Limited. Next, mention the name of the radiometer developed by the Raman Research Institute that designed to detect the faint 21 centimeter hydrogen signals from the cosmic dawn. So mention the name of that radiometer. It is what is the name of it? It is Pratyush. Right? Next, name the spy satellite launched by Israel into the designated orbit atop a Satvit rocket from Palchim Air Base. So it is OFAC 19. Name is OFAC 19th. Right? And it was located, where is this located? It is in south of Tel Aviv, the capital of Israel. Next, in September, which mission of NASA discovered two rocky Earth-sized exoplanets orbiting the near K-type star TOI 2322, situated approximately 195 light years from Earth? So, which is that satellite, which mission of NASA discovered this? It is TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Next,
Mention the country that in September unveiled the Jinglei-1 air-launched ballistic missile during the 2025 military parade. It is China. China unveiled this satellite. Unveiled this particular missile, ballistic missile. Next, GE Space, a Chinese space technology, launched a total number of 11 satellites for their which constellation? That is for their Geely constellation, using Smart Dragon 3 rocket from Tian Satellites Launch Center in East China, Shandong province. Right, this is the Geely satellites, and this GE Space is the company. Correct. GE Space. This is a China space technology. They have launched a total of 11 satellites for their Geely constellation using Smart Dragon 3 rocket. Correct. And this Geely constellation, it is expected to have 75 satellites by 2025 in the first phase. Next, in September, which space company announced the launch of their 4th generation Gen 4 satellite that is now available for commercial operations? So it is ICE. Next, in September, which Indian aerospace and defense company collaborated with Spain's Indra to successfully commission the Lenza and India's first indigenous 3-dimension air surveillance radar into Indian Navy on their Indian naval ship Mysore? So it is Tata Advanced Systems Limited, TASL. Next, in September, Astroscale Japan Incorporation signed a launch agreement with New Space India Limited for their in-situ space situational awareness Japan mission. Right? Next is name the Arjuna class asteroid discovered by astronomers in September that became Earth's latest Kazi satellite. It is 2025 PN7. Next is our homework section, students. First is name that beach that received the Blue Flag certification recently. Second, first indigenously quantum diamond microscope. It was unveiled by whom and developed by whom? Third question, tell me recently which country hosted the second edition of the World Health Organization Traditional Medicine Global Summit and the location where was this held? Fourth question, right, tell me recently which edition of Malabar exercise was conducted recently and who is the host nation here for this Malabar exercise? Fifth question, tell me recently India's largest green hydrogen plant is being set up, location of this plant and the company or organization that is setting up this plant. So students, these are your homework questions and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए लेबर कोड्स की जो अभी लागू होते हुए दिखेंगे। देन हम बात करेंगे मेजर डिजिटल अपग्रेड्स जो स्ट्रेंथन करेंगे फूड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज को। देन इंडिया होस्ट करेगा 7वां NSA लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। देन COP 30 समिट ये हेल्ड हुई 10 से लेके 21 नवंबर तक, कहाँ पर? ब्राजील में। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहने वाला है। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। अभी 4 नए लेबर कोड्स मेड इफेक्टिव टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द लेबर लॉज। ये जो नए लॉज हैं 21 नवंबर से लागू होते हुए दिखेंगे एंड जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं उनमें ये यूनिफाई होते हुए देखेंगे। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें द कोड ऑन वेजेस 2019 का, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। राइट, तो ये कोड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कोड ऑफ वेजेस, ये क्या कहता है कि मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। राइट, ये एक स्टैट्यूटरी राइट प्रोवाइड करता है टू मिनिमम वेजेस फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। फिर अगर हम देखें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ये बताता है कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं लेबर्स की वो सेफ होनी चाहिए। राइट, वहाँ पे सेफ्टी के इस जुगाड़ होने चाहिए, वहाँ पर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी
हमें एक प्रॉपर कंडीशंस चाहिए होते हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, वो सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पर होने चाहिए, राइट, एंड बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, इन्होंने अनवेल किए मेजर डिजिटल अपग्रेड्स टू स्ट्रेंथन फूड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स एंड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, राइट। देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम डिजिटली बात करें ना, तो डिजिटाइजेशन होने से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, बहुत सारी बेटर सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं। एंड इंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करना एक ईजी हो जाता है, हम बेटर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट, एक बेटर पॉपुलेशन को हम कैटर कर सकते हैं। एंड उन सबका फिर डाटा जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वो डाटा भी हम यहाँ पे इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड जो हैंडलिंग प्रोसेस होती है ना इसमें, वो भी इससे ईजी होती हुई दिखती है। अब हम देखते हैं एआई भी पिक्चर में आ गया है, राइट, मशीन लर्निंग। तो इनसे क्या होते हैं, हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं एंड पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर सेक्टर में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी जो सर्विसेज हैं, जो हमारे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, वो काफ़ी ग्रो होते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे भंडारण 360 ये लॉन्च किया गया, स्मार्ट एक्जिम वेयर हाउस सिस्टम्स लॉन्च किए गए, अन्ना दर्पण लॉन्च किया गया, इसी के साथ साथ हम देखेंगे आशा एआई प्लेटफॉर्म, मॉडर्न साइलो फैसिलिटी। तो ये सारी कुछ की इनिशिएटिव्स हैं जो अभी लॉन्च किए गए हैं, जहाँ पे डिजिटाइजेशन की मदद से हम इन सेक्टर्स को ग्रो होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया ने होस्ट किया 7th एडिशन ऑफ द एनएसए लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये कहाँ पर हुआ, ये न्यू दिल्ली में हमें इवेंट देखने को मिला। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। अजीत डोवाल जी जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं टू इंडिया, राइट, इन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया। ये 7वां एडिशन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग का ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिला। गेस्ट कंट्री यहाँ पे कौन सी थी, तो मलेशिया यहाँ पे गेस्ट कंट्री थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किन्होंने चेयर किया इस मीटिंग को, तो अजीत डोवाल जी के द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल अफेयर्स पे। अभी कॉप 30 समिट की हम बात कर रहे हैं, जो कि 10 से लेके 21 नवंबर तक हमें देखने को मिली। ये कॉप समिट हुई कहाँ पे थी, ये बेलम ब्राज़ील में हमें देखने को मिली थी, राइट। कॉप 30 करेक्ट, 10 से लेके 21 नवंबर तक ये इवेंट था। एंड इस इवेंट को प्रिजाइड किया गया किसके द्वारा, बाय ब्राज़ीलियन डिप्लोमेट एंड्रे अरहाना दो लागो के द्वारा, जो कि कॉप 30 के प्रेसिडेंट थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है लोकेशन का, एंड ये 30th सेशन है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, राइट, टू द यूएनएफसीसी, जो कि 10 से लेके 21 नवंबर तक हमें देखने को मिला बेलम ब्राज़ील में। यहीं पे अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया था, जहाँ पे इंडिया की अगर हम रैंक देखें, इंडिया 23rd पोजीशन पे आ जाता है। जो टॉप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्पॉट हैं, ये एम्प्टी रहे थे, क्योंकि किसी कंट्री ने इस पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, राइट। इस पे इतना काम नहीं कर रही है कोई कंट्री की फर्स्ट थर्ड पोजीशन आ सकें, राइट। तो यहीं पे अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली थर्ड पोजीशन खाली है, 3 पोजीशन, फिर 4th डेनमार्क, 5th यूके, 6th मोरक्को, 7th चिली, 8th लग्जमबर्ग एंड 23rd पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया। मार्क करेंगे स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट पे आते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। FAB जो कि है फर्स्ट अबू धाबी बैंक एंड हब 71, इन्होंने पार्टनर किया दोनों ने, ताकि UAE इंडिया CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट काउंसिल को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, राइट, उनके ऊपर काम कर सके, वो आगे ग्रो कर सकें, राइट। एंड UAE एंड इंडिया के बीच में जो स्टार्टअप्स हैं, एक दूसरी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकें। एंड स्टूडेंट्स देखो, जैसा भी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें जॉब्स प्रोवाइड करनी है, हमें यूथ को एजुकेशन के साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। तो वो कहाँ से होंगी, तो स्टार्टअप्स, MSMEs, राइट, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज लाने में, यूथ को जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। एंड MSME को आप देखते हैं कि सरकार इसलिए एक बहुत ज़्यादा बूस्ट देती है, बिकॉज MSME एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे इंडिया के यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए, स्टार्टअप्स आएंगे तो नए यूज केसेस, नए सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में देखने को मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इंडिया का नाम इंटरनेशनल स्केल पे होता हुआ देखेगा, राइट। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये इंडिया एंड UAE के बीच में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए ये पार्टनरशिप देखने को मिली। नेक्स्ट इकोनॉमी एंड बिजनेस में आते हैं स्टूडेंट्स। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इन्होंने रिटेन किया इंडिया का GDP एट 6.5% फॉर FY26। मार्क करेंगे
FY26 के लिए इंडिया की जीडीपी क्या प्रोजेक्ट की जा रही है? 6.5% की। इसी के अलावा अगर FY27 की बात करें तो कितनी प्रोजेक्ट की जा रही है? जीडीपी 6.7%, 6.5% है FY26 के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स एंड Amazon, इनके द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया फॉर वाईफाई पेटेंट लाइसेंसिंग। वाईफाई पेटेंट लाइसेंसिंग के लिए ये एक अग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखा है बिटवीन LG इलेक्ट्रॉनिक्स एंड Amazon। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। सुनील पालीवाल इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ IWAI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ये सक्सीड करेंगे विजय कुमार को। नेक्स्ट पे आते हैं फिर साइंस एंड टेक पे स्टूडेंट्स। इंडियन नेवी ने कमीशन किया एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS माही। मुंबई महाराष्ट्र में इसको भी कमीशन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहाँ पर जब ये कमीशन किया गया यहाँ पे एक सेरेमनी हुई दैट वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, राइट। एंड ये वेसल का नाम क्या है? INS माही। इसका एक मैस्कॉट भी याद रखेंगे, इसका मैस्कॉट है चीता, राइट। चीता यहाँ पे इसका मैस्कॉट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। देन ये जो INS माही है इसको बनाया किसके द्वारा गया है? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ओमान टू लॉन्च इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सेट 1। ये ओमान की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहेगी ओमान सेट 1, मार्क करके चलेंगे, राइट। एंड बेसिकली ये दिखाता है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, राइट, ये जो अपने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना चाहते हैं एंड बाकी कंट्रीज पे जो रिलाई करते हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना चाहते हैं, उसको ये शोकेस करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर। नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025। ये कहाँ पर हुए? ग्रेटर नोएडा यूपी में हमें अभी ये इवेंट देखने को मिला। सो इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट ऑफ दिस। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की फाइनल्स की। ग्रेटर नोएडा यूपी में देखने को मिले। ये 16 से लेके 20 नवंबर तक ये इवेंट हुआ था एंड 5-day इवेंट ये रहेगा, राइट। 2 स्टेजेस में हमें देखने को मिला था। फर्स्ट एडिशन था ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये फर्स्ट एडिशन था, राइट। फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज एंड देन फाइनल्स हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें इंडिया एमर्ज एज द टॉप नेशन, हमारा देश एमर्ज करके आया एज द टॉप नेशन विद अ रिकॉर्ड 20 मेडल्स। 20 में से अगर हम देखें 9 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये आप मेडल टैली देख सकते हैं। इंडिया फर्स्ट पे, सेकंड कजाकिस्तान, थर्ड उज्बेकिस्तान, फोर्थ ब्राजील एंड फिफ्थ पोलैंड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंडिया ने अभी जीता इनॉग्रल ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप को, राइट। T20 आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, तो वीमेंस की ब्लाइंड टीम ने, इंडिया की वीमेंस ब्लाइंड टीम ने यहाँ पे T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप को जीत लिया है, मार्क करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे। 19 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस डिजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसके प्रिकॉशन के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। जनरली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ऑन द 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर मंथ। इस बार ये 19 नवंबर को था 2025 में एंड इसका 24वां सेलिब्रेशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स फिर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। चिल्ड्रंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, इनकी हेल्थ वेलबींग के बारे में, यूनिटी के बारे में एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो स्टूडेंट्स की एक दूसरी कंट्री में हम जाते हैं, एट कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम ज़रूर याद रखेंगे, लिसन टू चिल्ड्रन, माई डे माई राइट्स, ये थीम रहेगी यहाँ पे। सो टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टीवी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, क्योंकि टीवी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आज के टाइम पे। आप देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन हमें आज के टाइम टीवी के माध्यम से मिलती है, एड्स टीवी के माध्यम से आते हैं, न्यूज़ टीवी के माध्यम से आती है, राइट। तो एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए टीवी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी ज़िंदगी में। उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को। फिर यहीं पे याद रखेंगे इस बार हमने इसका 29th ऑब्जर्वेंस किया है, राइट। 21वीं बार हमने इसको, या फिर 21वां एडिशन है जो हमने इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। फिशिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, फिशिंग कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, वो जो चैलेंजेस फेस करते हैं, राइट, वो कम्युनिटी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं,
राइट एंड पहली बार 1998 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। थीम इन इंडिया क्या रहेगी? इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथन वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग काफी स्ट्रेंथन होती हुई दिखेगी। कौन सा एडिशन ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट अभी 2 से 3 सितंबर तक हुआ दिल्ली में? तो ये 20वां एडिशन था ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का। नेक्स्ट, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनवेल्ड द थीम ऑफ ESTIC, जो कि है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, जो कि 3 से 5 नवंबर तक होगा भारत मंडपम में। सो किनके द्वारा अनवेल की गई थीम? वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट, किन्होंने लेड किया इंडियन डेलीगेशन को एट द 44th मीटिंग ऑफ SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर काउंसिल, जो कि किर्गिस्तान में हुई? तो TV रविचंद्रन जी के द्वारा इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट एवर ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज? तो किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया? तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं फिर, कहाँ पर 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हुई इन विच इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया? तो इटली में ये 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हमें देखने को मिली। फिर आ जाते हैं, कितनी फंडिंग अनाउंस की गई थी फॉर द कॉल फॉर प्रपोजल स्कीम्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए यहाँ पे अभी फंडिंग अनाउंस की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी 2 दिन के नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली, जहां पर बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि 362.5 मिलियन टन हमें फूड ग्रेन्स को ग्रो करना है, राइट, इन द राबी सीजन फॉर FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये तो थे समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द कंपनी जिन्होंने एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी हैदराबाद तेलंगाना में, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके फ्यूज सिलिका रडार डोम्स, अ वाइटल कंपोनेंट यूज्ड इन सीकर बेस्ड गाइडेंस सिस्टम्स मिसाइल्स। तो क्या नाम रहेगा उस कंपनी का जिनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया? तो ये है, कौन सी कंपनी बताइए? नेम दैट। तो राइट ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द रेडियोमीटर, जो कि डेवलप किया गया बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको डिजाइन किया गया टू डिटेक्ट फेंट 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल्स फ्रॉम कॉस्मिक डॉन। तो वो है प्रत्युष। नेक्स्ट पे आते हैं, मेंशन दैट, और SBI सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बाय इजराइल इनटू द डेजिग्नेटेड ऑर्बिट स्टॉप अटॉप द सेविट रॉकेट। ये पाल्चिम एयरबेस कहाँ पर है? टेल अवीव में है, जो कि कैपिटल है इजराइल की, राइट। तो SBI सैटेलाइट का नाम बताओ, वो है OFEK 19। नेक्स्ट आ जाते हैं, भी किस मिशन ने नासा के डिस्कवर किए 2 रॉकी प्लैनेट, जो कि नियर बाय K टाइप स्टार के TOI 2322 के आसपास घूम रहे थे, ऑर्बिट कर रहे थे, 195 किलोमीटर दूर है। तो टेस्ट के द्वारा ये किया गया, ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा, ये नासा का ही एक मिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो, मेंशन करो जिन्होंने अनवेल किया जिंगलई 1 एयर लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल को अपनी मिलिट्री परेड के दौरान। तो चाइना के द्वारा ये ब्लास्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अभी जी स्पेस, जो कि एक चाइना स्पेस कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया 11 सैटेलाइट्स को टोटल। तो जी स्पेस क्या बना रही है? गैली कॉन्स्टलेशन बना रही है। 11 सैटेलाइट्स ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि इनका जो पहला फेज है कि 75 सैटेलाइट्स ये लॉन्च करेंगे 2025 में टोटल। नेक्स्ट, किस स्पेस कंपनी ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ 4th जनरेशन जेन 4 सैटेलाइट दैट इज नाउ अवेलेबल फॉर कमर्शियल ऑपरेशन? तो आइस के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अभी सितंबर में किस इंडियन एरोस्पेस कंपनी ने किस इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी ने कोलैबोरेट किया स्पेन के इंदिरा के साथ, ताकि सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सके द लेंजा एन, इंडिया का पहला इंडिजीनियस 3 डायमेंशन एयर सर्विलेंस रडार इनटू द इंडियन नेवी। और किस इंडियन नेवल शिप पे? INS मैसूर पे इसको लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, सितंबर में एस्ट्रोस्केल जापान इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने लॉन्च किया एक अग्रीमेंट किसके साथ? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ फॉर द इन सीटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन के लिए। नेक्स्ट अब चलते हैं स्टूडेंट्स MOU पर। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो कंपनी जिन्होंने एक MOU साइन किया विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ डिजिपिन। तो वो है मैप माई इंडिया, मैपल्स इनका ये प्लेटफॉर्म है, राइट। एंड यहाँ पे हम देखेंगे ये MOU यूटिलाइज करेगा मैपल्स का, जो कि एक मैपिंग प्लेटफॉर्म है मैप माई इंडिया का, ताकि डिजिपिन जो है, डिजिपिन क्या होता है? डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर, इसका इंप्लीमेंटेशन किया जा सके, इसको डेवलप किया जा सके। एंड ये डिजिपिन बेसिकली इसको बनाया किसके द्वारा गया है? IIT हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है।
नेक्स्ट, किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने कोलैबोरेट किया इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ अगस्त के महीने में टू इंप्लीमेंट इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम एट द 84 फी प्लाजा NH48 गुजरात में। तो किस प्राइवेट बैंक ने कोलैबोरेट किया, वो है ICICI बैंक ने कोलैबोरेट किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अगस्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद इन्होंने पार्टनर किया इंडियन आर्मी सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन के साथ अंडर आर्मी ट्रेनिंग कमांड टू इस्टेब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका नाम रहेगा विग्राहा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टार्टअप प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इन पार्टनरशिप विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई महाराष्ट्र इन अगस्त, जो सपोर्ट करेगा मीडिया टेक स्टार्टअप्स को। तो वो है वेवएक्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने कभी MOU साइन किया विद इंडियन रेलवेज ऑन 1 सितंबर टू एनहेंस द इंश्योरेंस बेनिफिट्स फॉर रेलवे एम्प्लॉयज। तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। नेक्स्ट, अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्होंने MOU साइन किया विद ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड टू यूज हाई रेजोल्यूशन इमेजरी एंड स्ट्रीट बेस्ड मैप्स फॉर डिजिपिन पोर्टल। तो वो है ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करो जिन्होंने लॉन्च किया समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहॉर्ट 2 इन कोलैबोरेशन विद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एंड द इंडस एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन इन सितंबर, जो सपोर्ट करेगा डीप टेक स्टार्टअप्स को। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक को जिन्होंने पार्टनर किया DPIIT के साथ टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो वो कौन है, वो है ICICI बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इन्होंने 10 ईयर्स का एक MOU साइन किया विद हॉराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज राइट सिंगापुर के साथ टू जॉइंटली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन टेलर्ड फॉर द इंडियन मार्केट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेंशन करो स्पोर्ट को विद नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जिन्होंने एक MOU साइन किया टू एस्टैब्लिश अ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन एट द पोर्ट। तो वो कौन सा पोर्ट है, वो है VO चिदम्बरनार पोर्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया मांडोवी ड्राइडॉक्स एंड रिप्ली ग्रुप के साथ टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट पैकेज फॉर इंडिया के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक के साथ अंडर द ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये जो प्रोजेक्ट है इसको डिप्लॉय किया जाएगा किस पोर्ट पर, तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात में इसको डिप्लॉय करा जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेंशन द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जिन्होंने एक MOU साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू इन्वेस्ट 21,000 करोड़ रुपए अंडर राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। तो वो कौन सा बैंक है, वो है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया, 4 स्ट्रेटेजिक MOU साइन किए गए हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, पॉलरॉन इन्फोटेक, देन राजा राम बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉन्क 9 टेक प्राइवेट लिमिटेड, इन 4 के साथ, ताकि जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में, उसके दौरान ये साइन किया गया। तो मैं नेम दैट कंपनी जिन्होंने ये 4 MOU साइन किए वो है RRP इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की इंडिया के साथ ताकि दोनों मिलके फर्दर इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर सके। एंड विद दिस ये देखेंगे ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मेंबर स्टेट बन गए जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया इंडिया की नई इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फ्रेमवर्क के अंडर। तो ये है इजराइल। नेक्स्ट पे आते हैं, इस सितंबर के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन्होंने कोलैबोरेट किया विद मेंटर टुगेदर एंड क्विकर के साथ to strengthen the job access and career mentoring through the National Career Service Portal. नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट जिन्होंने भी एक MOU साइन किया है जापान एशियन वन को लिमिटेड के साथ ताकि ग्लोबल स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जा सके फॉर द यूथ ऑफ स्टेट इन जापान। तो किस स्टेट के साथ ये किया गया, किस स्टेट ने किया, ये है मेघालय। नेक्स्ट, मतलब मेघालय के बच्चों को जापान में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके, उनको ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द तेलंगाना गवर्नमेंट इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया विद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ताकि प्रमोट किया जा सके AI ड्रिवन इनोवेटिव सॉल्यूशंस को दैट आर अलाइन विद द पब्लिक गुड एंड डिजिटल इकोनॉमी गोल्स। तो ये है डेकन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने पार्टनर किया विद इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सितंबर के महीने में ताकि जॉइंटली डेवलप किया जा सके ड्यूल यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज अंडर एस्पायर प्रोग्राम। तो वो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो है एडसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या फिर वो कौन सा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वो है एडसेल इंडिया लिमिटेड। Next is our homework section, students. First is name that beach that received the Blue Flag certification recently. Second, first indigenously quantum diamond microscope. It was unveiled by whom and developed by whom? Third question,
Tell me recently which country hosted the second edition of the World Health Organization Traditional Medicine Global Summit and the location where was this held. Fourth question, right? Tell me recently which edition of Malabar exercise was conducted recently and who is the host nation here for this Malabar exercise. Fifth question, tell me recently India's largest green hydrogen plant is being set up, location of this plant and the company or organization that is setting up this plant. So students, these are your homework questions and I need to see maximum participation from all the students watching this video.